concepts of we will start by going through some essential concepts or basic concepts in AI, artificial intelligence, and machine learning. So let's start with the big data first. So what is big data actually? Big data actually is a very interesting, you can say, term nowadays, and it is used along with the AI and machine learning, ML, and cloud computing. So when you talk about big data technologies, you need to say that cloud technologies, AI, and machine learning, they are included in this particular area or domain. So mostly people say that data which has volume, which has a pace of generation, velocity, which has a variety of data sources, and which is continuously on the verge of evolving data types, different data types. So that is big data. So basically there is no size limit designated for the term big. I mean, we cannot say that, okay, 1 GB is big, or 1 terabyte is big, or 1 zettabyte is, or petabyte is big. So the term big is, there is no, does not specify any boundaries here. But when generally accepted and definition is when the size of data is large enough that it cannot be processed on a single machine. It is called as big data. So this is very generic definition of big data. So based on current 2018 generation of computers, this equates to something roughly more than 10 GB. So 2018 के मुताबिक 2018 की जनरेशन में जो जनरेशन कंप्यूटर्स थी उसके मुताबिक जो है 10 GB डाटा जो है वो एक सिंगल मशीन में नहीं प्रोसेस हो सकता. सो दैट्स वाई, सो वो एक 10 GB जो है वो उससे बड़ा साइज जो है उसको बिग डाटा कहा गया. फ्रॉम देयर इट कैन गो टू हंड्रेड्स ऑफ पीटाबाइट्स and or terabytes and more. So this is a very basic concept of big data or big data definition. So why should we treat big data differently? Big data और दूसरे डाटा में फर्क तो obviously सिर्फ साइज का है, ठीक है. The size is the only difference between the two you can say definitions of data or kinds of data, big data or not so big data. Obviously with the size in consideration, the processing or handling of data also changes drastically when we talk about big data and when we talk about the normal data which is not so big. So I would use the term normal data for not so big data. Okay, for processing for normal data, we need not worry about the location where each bit of data is stored, as all data can be loaded into memory of a single machine and can be accessed without additional overhead. All the typical numeric or string operations are executed in predictable time. तो जब हम नॉर्मल डाटा की बात करते हैं तो हमें इस चीज़ के लिए पढ़ी करने की जरूरत नहीं होती कि डाटा आपकी मेमोरी में कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कितने बिट्स में स्टोर हो रहा है, और वो एक जो सिंगल मशीन में किसी एडिशनल जैसे ओवरहेड या क्या कहते हैं उस पर एडिशनल परफॉर्मेंस उसकी हैंडल किए बगैर वो उस पर एग्जीक्यूट हो जाता है. However, जब हम बिग डाटा की बात करते हैं तो सिंगल मशीन की बजाय हम क्लस्टर ऑफ मशीन्स की बात करते हैं. तो और हर मशीन जो है उसकी अपनी स्टोरेज और कंप्यूटेशनल कैपेसिटी हो सकती है, रिसोर्सेज हो सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. फॉर ऑल न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग ऑपरेशंस, one must carefully split the data into different machines such that all operands in individual operations are available on the same machine. तो आप अपने जो डाटा को, ना सिर्फ डाटा को बल्कि अपने ऑपरेशंस को भी डिफरेंट मशीन्स पे उनके रिसोर्सेज के मुताबिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और
और इसमें एक जो चीज़ आपको अगर किसी एक मशीन में इनफ रिसोर्सेज या कंप्यूटेशनल पावर नहीं है तो आप को फिर एडिशनल काम भी करना पड़ता है। वो ये कि उस मशीन से वो डाटा या प्रोसेस उठा के किसी और मशीन में लेके जाना पड़ता है, जो कि एक एडिशनल ओवरहेड क्रिएट करता है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस goes through the wires or networking wires or modem. So there is additional pressure or overhead on your router or on your network as well, network traffic as well. Iterative operations are especially very computational intensive for big data. Thus, when dealing with the big data, one must also carefully design the storage along with operations. So this was about why should we treat the big data differently. It is because with the increase in size and the involvement of multiple machines, the scenario is entirely different, because most of the times the processing is you can say distributed, and computation is also storage is also distributed. So when we talk about machine learning, so basically machine learning has you can say some statistical methods. All of the techniques in the machine learning, all of the algorithms in machine learning, they are statistical based, and they are classified into three types actually: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. So these are the three types of learnings that are present or commonly you can say discussed in machine learning. So first we will discuss about supervised learning. So simply let's say that there is a machine learning system as a that we can consider as a black box that produces some output when given some input. So if we already have a historical data that contains the set of outputs for a set of inputs, then the learning based on this data is called as supervised learning. तो सिंपली अगर इसको अल्फाज सिंपल अल्फाज में अगर बयान किया जाए तो सुपरवाइज लर्निंग ऐसी लर्निंग होती है जिसमें आपको के पास ऑलरेडी डाटा मौजूद होता है कि अगर ये इनपुट है तो आउटपुट क्या होगी। तो अगर आप की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम या आपके अप्रोच इस चीज़ पे बेस कर रही है आपका डाटा कि आपके पास डाटा मौजूद है कि व्हाट इज़ योर इनपुट एंड व्हाट इज़ द रेलेवेंट आउटपुट, देन इट इज़ कॉल्ड एज सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसकी क्लासिकल एग्जांपल जो है वो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन एक जनरल टर्म है, इसको आप किसी भी चीज़ में पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल ली गई है ये एक बहुत फेमस जो है वो डाटा सेट है जिसमें फ्लावर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को मुहैया किया गया है, जिसमें सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ, यानी कि पेटल फूल के एक पार्ट्स होते हैं, सेपल फूल के पार्ट्स होते हैं, उसकी लेंथ और विड्थ दोनों की गई है, और फिर उसमें 3 किस्म के फ्लावर्स कंसिडर किए गए हैं। ठीक है, तो ये तो हमें क्या पता है कि यहाँ पे 3 मुख्तलिफ फ्लावर्स हैं और 4 डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, और इसे आप मेजरमेंट्स कह लें या वेरिएबल्स कह लें। तो बेसिकली अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे ये सब डाटा मौजूद है तीनों फ्लावर्स का विद ऑल देयर मेजरमेंट्स, और हमारे पास फॉर एग्जांपल 25 जो हैं वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हर टाइप के फ्लावर की, ये सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। The data would then serve as training data where we have the inputs, the 4 major properties and the corresponding outputs that are available for the training the model. Then a suitable machine learning model can be trained in a supervised manner. Once the model is trained, and we can then classify any flower based on the sepal and petal. अच्छा, ये अभी आप इस चीज़ पे तवज्जो ना दें कि यहाँ पे ऐसे में ट्रेनिंग की बात की है, टेस्टिंग की बात की है, और we'll see in the वो क्या आगे जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे कि व्हाट इज़ ट्रेनिंग, व्हाट इज़ टेस्टिंग, और यहाँ पे मॉडल जो बार बार जिक्र हुआ है वो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग की जो मिसाल है वो ये ऐसे ही है कि आप को पास डिफरेंट फ्लावर्स हैं और उसकी डिफरेंट वेरिएबल्स, उनकी करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं आपके पास।
तो आपके पास आपको ये पता है कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो ये फ्लावर होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो ये फ्लावर होगा। तो दैट मीन्स कि हम जिस जो इनपुट दे रहे हैं उसकी आउटपुट हमें ऑलरेडी पता है। तो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब हमें, अगर हम सिर्फ, इसका मतलब है कि हम अगर सिर्फ ये चार प्रॉपर्टीज जो हमारे पास हैं, चार वेरिएबल्स हैं, उनको कंसिडर करें, तो अगर हम इस डाटा की बेस पे हम एक अपने जहन में खाका या मॉडल बना सकते हैं कि अच्छा ये प्रॉपर्टीज हैं, इसका मतलब है कि दिस 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 फ्लावर इज फ्लावर वन, दिस फ्लावर इज फ्लावर टू, दिस फ्लावर इज फ्लावर थ्री। सो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। आप ये ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन में भी लोग यूज़ करते हैं, इमेज एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्लासिफिकेशन, जहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे एक व्हीकल को आइडेंटिफाई करना है, नंबर प्लेट को आइडेंटिफाई करना है, एंड सो ऑन। सो क्लासिफिकेशन इज एवरीवेयर इन ऑल अराउंड अस। और नॉर्मली ये सुपरवाइज लर्निंग मेथड कहलाता है, जहाँ पे आपको इनपुट्स के अकॉर्डिंगली आउटपुट्स का पता होता है। Second type of learning method is unsupervised learning method. So unsupervised learning method is just like the label data is not available. मतलब ये है कि आपके पास वेरिएबल्स का डाटा मौजूद है, मतलब मेजरमेंट्स मौजूद है, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया, हिस्टोरिकल डाटा मौजूद नहीं है, मतलब आपको ये नहीं पता कि ये वेरिएबल्स का कम्बिनेशन है या ये मेजरमेंट्स का कम्बिनेशन है, तो व्हाट इज फ्लावर टाइप, मिसाल के तौर पे। तो दिस इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सो इसकी क्लासिकल एग्जांपल जो है क्लस्टरिंग मेथड है, ठीक है। एग्जांपल अगर ऊपर वाली में से ये कंसिडर करें कि आपके पास अगर सेपल एंड पेटल डायमेंशंस हैं तीनों फ्लावर की, लेकिन आपको ये नहीं पता कि नेम क्या है हर मेजरमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, कौन से फ्लावर्स हैं जो मौजूद हो, मतलब डेजिग्नेटेड हैं, यानी आपके पास हिस्टोरिकल डाटा मौजूद नहीं है, लेबलिंग मौजूद नहीं है। सो इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि अगर ये मेजरमेंट्स मौजूद हैं तो आप इसको फ्लावर वन कहें, फ्लावर टू कहें या फ्लावर थ्री कहें। दिस टाइप ऑफ learning or when this type of data is available, so this is called as unsupervised learning. Normally ये जो learning जो है techniques, these learning techniques are based on the type of the data set we have. If the data set is labeled, then it is a supervised learning, and if it is unlabeled, then it is called as unsupervised learning. Labeling means we don't know the output of the corresponding input. So the variables we are giving as input, if we know the output of the variables, it is called as supervised learning. And if the variables that are going into the input, we don't know about the corresponding output, then it is called as unsupervised learning. And then the third type of learning is reinforcement learning. Reinforcement learning is a special type of learning method that needs to be treated separately from the supervised and unsupervised methods. Reinforcement learning जो है, इसमें basically आप feedback लेते हैं environment से, so ना तो ये supervised है और supervised मतलब feedback during the execution of you can say learning process. Learning का समाप्त होता है, learning को हम बाद में बताते हैं। यहाँ पर learning से मतलब ये है कि आपकी data की base पे जो आप उसमें से patterns learn कर रहे हैं। So from learning आप अभी इसको ये या model उसमें से बना रहे हैं learn करके। So this is called learning. So basically reinforcement learning जो है it involves feedback from the environment. However, it does not have a set of labeled samples available for training, as well as hence it cannot be treated as supervised learning. इसमें labeled samples नहीं होते, इसलिए इसको आप supervised learning नहीं कह सकते, लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि during that process of pattern recognition or classification or you can say learning process overall, so उस process के दौरान ये environment से feedback लेता है labels related. In reinforcement learning methods, the system is continuously interacting with the environment in search of producing desired behavior
and is getting feedback from the environment. So ये continuously environment से feedback ले भी रहा होता है और desired जो आपकी behavior है उसको execute कर रहा होता है. So this is reinforcement. आगे हम देखेंगे इनके methods हैं and we will go into the detail as well. अच्छा, फिर machine learning methods which are based on time. So these were some of the methods, learning types, and they are based on how your machine learning algorithm interacts with the data and what kind of data is available. So machine learning method can also be, this is another way of you can say dividing the machine learning methods. The first one is supervised, unsupervised, and reinforcement learning, and the second one is on the base of based on the time. So another way to slice machine learning methods is to classify them on the base based on the type of data they deal with, and the systems they take in that take in static label data are called static learning methods, and the systems that deal with the data that is continuously changing with the time are called as dynamic data. So each type of methods can be supervised or unsupervised. However, reinforcement methods are always dynamic. So this is very important concept actually, static or dynamic. So अगर तो आपके पास data जो है वो static labeled हो, मतलब ये कि जब भी आप algorithm में वो input जारी है, so it is, if all the parameters are same, then the data input will be always be same. अगर आप algorithm के कुछ parameters या variables different कर दें, तो data जो है वो data input different हो जाएगी, लेकिन for same amount of or a combination of variables, it will always remain same. So it will produce the same output or model each time you run it. So this is called static method or static learning. But अगर जितनी बार आप जो है वो डाटा में इनपुट ले रहे हैं, मेथड्स में इनपुट ले रहे हैं, वो डिफरेंट आए, डिफरेंट इनपुट आए, जिसकी वजह से उसका मॉडल या पैटर्न जो है वो डिफरेंट तरीके से बिल्डअप हो, तो दैट मीन्स द लर्निंग इज कॉल्ड एज विल बी कॉल्ड एज डायनामिक लर्निंग. So static and dynamic learning are two types of learning methods. So static learning को पहले देखते हैं, और जिस तक अच्छा static और learning methods is the mechanism is the division based on how the intake of data is you can say considered into the machine learning algorithm. So it can be supervised and can be unsupervised as well. So, but reinforcement methods are always dynamic methods. Static learning refers to the learning on the data that is taken on as a single snapshot, and the properties of the data remains constant over time. Once the data model is trained on the data, the trained model can be applied to similar data anytime in the future, and model will still be valid and will perform as expected. अगर आपका data same है, आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सेम है, तो आपके पास हमेशा जब भी आप इसको रन करेंगे, जब भी एग्जीक्यूट करेंगे, यू विल ऑलवेज गेट द सेम मॉडल एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मॉडल. सो आपके पास मशीन लर्निंग का सेम आउटपुट आएगा. ठीक है, इसकी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, इमेज क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. बट ऑन द अदर हैंड ये टाइम सीरीज बेस्ड लर्निंग इसे कह सकते हैं आप. द डाटा इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज टाइम सेंसिटिव एंड कीप्स चेंजिंग ओवर टाइम, एंड द मॉडल ट्रेनिंग is not a static process, but the model needs to be trained continuously to remain effective. A typical example of such problem is weather forecasting or stock market predictions. A model trained a year back will be completely useless to predict the weather for tomorrow or predict the prices of any stock for tomorrow.
The fundamental difference in the two types is notion of state. In static models, the state of the model never changes. In a dynamic model, the state of the model is a function of the time and it keeps changing. So that is the point here कि data चूंकि change हो रहा है continuously, तो इसका मतलब है कि the prediction will not be same, the classification will not be same, or the model will not be the same at all. So that so each time you run the model, that because the data is being updated, so the model is updated as well. So these are the two types of learning model based on the time. One is static, other is dynamic. So dynamic model always changes. In static, the model never changes. Because the data or input remains the same every time. So यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो you are welcome to ask. I will allow participant to ask any question. जी, कोई सवाल करना चाहता है? Okay, dimensionality. No, this is a very important concept and very popular concept in machine learning. And dimensionality, it is often a confusing concept when dealing with various data sets. From physical standpoint, dimensions are space dimensions, length, width, and height. ठीक है? लेकिन ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है. आप फिजिक्स में जब डायमेंशंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है स्पेस डायमेंशन, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट होती है. लेकिन हम यहाँ पे फिजिक्स की डायमेंशंस की बात नहीं कर रहे. जो रियल लाइफ सिनेरियो में हम कभी भी 3 डायमेंशन से ज़्यादा हम उसको ना इनकाउंटर नहीं करते, हम उसको फेस ही नहीं करते. बट मशीन लर्निंग में हम लोग हज़ारों नहीं लाखों डायमेंशंस भी वहाँ पे हो सकती हैं. ठीक है? बेसिकली डायमेंशनलिटी को या डायमेंशंस को मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंथ, विड्थ या हाइट नहीं समझा जाता. मशीन लर्निंग में डायमेंशंस आर वेरिएबल्स और मेजरमेंट्स, you can say any kind of variable, whether dependent or independent variable. So any kind of measurement. जैसा एक स्टूडेंट की क्लास है, स्टूडेंट के मैं रिकॉर्ड की बात करूं, मैं एक बड़ा सा टेबल अगर मेरे पास हो जहाँ पे स्टूडेंट का नाम और वो सब कुछ लिखा हो, उसके डेट ऑफ बर्थ, उसकी फर्स्ट और लास्ट नेम, उसके एड्रेस और उसकी एज, हाइट, CGPA और भी बहुत सारी चीज़ें. तो ये जो हर आपको हेडिंग यानी वेरिएबल नज़र आ रहा है, जैसा एज एक वेरिएबल है, ईयर एक वेरिएबल है, तो दीज आर कॉल्ड एज डायमेंशंस. सो इस यानी कि आप डाटा की जो जितनी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्मेट आप अगर मोस्ट ऑफ टाइम्स आपको मिलती है, तो वो सारी आपकी डायमेंशंस होती हैं या वेरिएबल उसको कहलाते हैं. ठीक है? In order to understand these high dimensions, we need to look at the fundamental property of dimensions. The space dimensions are defined such that each of the dimension is perpendicular to or orthogonal to the other two. ठीक है? ये space dimension होती है. This property of orthogonality is essential to have unique representation at all the points in the 3-dimensional space. ठीक है? If the dimensions are not orthogonal to each other, then one can have multiple representation for the same point in the space and whole mathematical calculations
based on it will fail. For example, if we set up the three coordinates as length, width, and height with some arbitrary origin, the coordinate 0, 0 marks the location of the origin itself. The coordinate 1, 1, 1 will mark a point space that is 1 unit away from the origin in each of the 3 dimensions and is unique. No other set of coordinates will mean the same location in the space. So ये space के जो है ना उसके उसमें define किया गया कि dimensions आप कैसे define करते हैं normally physics में आप ऐसे define कर रहे होते हैं. So let's extend this concept for high dimensions. It is relatively easy to add more dimension mathematically, but it is very hard to visualize them spatially. If we add a fourth dimension, it needs to be orthogonal to all previous 3 dimensions. In 4-dimensional space, the coordinates of the origin would be 0, 0, 0, and the point 1, 1 is the 3-dimension space may have coordinated 1, 1, 1, 1, 0 in 4-dimension space. ठीक है? So 4 dimension जितनी dimensions आप ऐड करते जाएंगे complexity इतनी ज़्यादा होती जाएगी और इसमें कैच ये है कि मसलन 4th dimension इसमें ऐड की है तो वो उसमें origin का point of view से जो है उसको भी अपडेट होना होता है. तो जैसा इसमें origin इसका टेट्रा 0 पे है 4 0 है यहाँ पे, बट ट्रिपल वन पॉइंट जो है वो किस पे है, ये 4-dimension स्पेस में इस तरह से लाई करेगा 1 1 और 0. तो ये उसको ऑर्थोगोनल होना भी ज़रूरी है और उसके पॉइंट अपडेट करना भी ज़रूरी है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. सो ये डायमेंशनली इस तरह इसको डिफाइन किया गया, लेकिन मैंने मैथमेटिकली या फिजिकली उसकी बेसिक्स हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट हियर बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज़ द फीचर्स. Consider the example of iris data described in previous you can say discussion. The input has 4 features: length and width of sepal and petal. ठीक है, आपके पास 4 फीचर्स थे, sepal और petal की length और width. तो as all of these 4 features are independent of each other, these 4 features can be considered as orthogonal. Thus, when we were solving the problem with the iris data, we were actually dealing with 4-dimensional input phase. So इसमें 4 फीचर हैं, वो 4-dimensional data हो गया. Even if adding arbitrary large number of dimensions in is fine from mathematical standpoint, there is one problem. With the increase in dimensions, the density of the data gets diminished exponentially. For example, if we have 1000 data points in training data and data has 3 unique features, let's say the value of all the features is within 1 and 10. Thus, all these 1000 data points lie in a cube of size of 10 into 10 into 10. So, ये अगर आपके पास data points जितने ज़्यादा होते जाते हैं और आपके पास dimension मिसाल के तौर पर सिर्फ 3 dimensions हैं या 3 features हैं मिसाल के तौर पे, तो होता ये है कि अगर वो उसकी एक जो रिकॉर्ड है उसके हर रिकॉर्ड जो है उसकी वैल्यू जो रेंज कर रही है 1 से 10 के दरमियान, तो इसका मतलब 1000 रिकॉर्ड है और उनको अगर 3-dimension स्पेस में प्लॉट करें तो वो बहुत ज़्यादा आपस में जो है ना क्या कहते हैं पास प्लॉट होंगे और आप उनको जो है ना अलग से जो है ना आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. So the density is 1000 by 1000 or 1 sample per unit cube. If we had 5 unique features instead of 3, then quickly the density of the data drops to 0.01 sample per unit 5-dimensional cube. So the density of the data is important. As higher the density of the data, better is the likelihood of finding a good model. क्योंकि हमने and higher is the confidence in the accuracy of the model. So जितनी ज़्यादा डेंस डायमेंशंस होंगी उससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि उसमें इजाफी पॉइंट्स ऐड होते जा रहे हैं. 3-dimension स्पेस में तीन पॉइंट्स हैं और 5-dimension स्पेस में 5 पॉइंट्स के बेस पे आपने उसे प्लॉट करना है. तो इन दैट सिनेरियो
जो पॉइंट्स हैं एक दूसरे से दूर दूर होते जाएंगे, ठीक है। सो इन दैट केस जो डेंसिटी जो है वो जो है ना वो ड्रॉप होगी, और जितना हाई डायमेंशन डाटा होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी ड्रॉप होगी, और हमारे लिए इतने अच्छे चांसेस है कि हम किसी पैटर्न को या किसी मॉडल को उस डाटा में से निकाल सकें। So the more dense the more dimension, the higher the dimension of the data is, the good the model is, and the better the confidence we have in the accuracy of the model. If the density is very low, that there would be very low confidence in the trained model using that data. Hence, although high dimensions are acceptable mathematically, one needs to be careful with the dimensionality in order to be able to develop a machine learning model with high confidence. तो इसमें एक कैच ये है कि हाई डायमेंशन में जैसे जैसे हम हाई डायमेंशनलिटी में जाते हैं, हमारे लिए मॉडल को ट्रेन करना आसान होता है, मॉडल बिल्ड करना आसान होता है, लेकिन उसमें दूसरे इसका डाउन साइड ये है कि अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी तो हमें मॉडल पे कॉन्फिडेंस भी लूज होना शुरू हो जाएगा विद द passage of time, क्योंकि it will not be a reliable model. So in either case, the dimensionality is considered as a curse. Dimensionality कह लें या कह लें इसे number of features कह लें. So why it is important? Because the machine learning algorithms, they are not straightforward. They are based on statistical methods, and statistical method which actually iteratively you can say extract the features from the important features from the data and build a model or pattern. So this is called machine learning model, or a prediction of the model, or classification model. So in either case, the dimensionality adds value to the model, and also it can also be have negative impact on the model itself if the number of samples are too low, or the number of dimensions are very high, because in that case the dimension, it is not easy for many important features may be lost during that process of model formation. So this is the dimensionality, and some concepts of dimensionality we will discuss with the passage of time with respect to different machine learning algorithms, whether supervised, unsupervised, or static dynamic. So each one has a different way of dealing with the curse of dimensionality, or the problem of dimensionality. Anyone having any question until now, you can ask.